Good morning, students. I hope you all are well and doing mathematics comfortably. These days, we people are doing surface of revolution अर्थात यदि किसी वक्र के चाप को एक्स एक्सिस या वाई एक्सिस या किसी लाइन के सापेक्ष उसको परिक्रमण करवाया जाए तो जो सरफेस बनता है, जो पृष्ठ बनता है, उसका क्षेत्रफल, उसका सरफेस एरिया कैसे कैलकुलेट करें। अभी तक हमने जो सरफेस एरिया कैलकुलेट किया है वो सरफेस एक्स एक्सिस के रेस्पेक्ट में उसको रोटेट करवाने से बना है। उसकी परिक्रमण जो है वो एक्स एक्सिस के सापेक्ष हमने ली है और कार्टेशियन इक्वेशन लिया है। आज हम पैरामीट्रिक इक्वेशन लेंगे और उस कर्व को एक्स एक्सिस के रेस्पेक्ट में यदि रोटेट किया जाता है तो जो सरफेस बनता है उसका एरिया कैसे कैलकुलेट किया जाए। फॉर्मूला एक ही है, आप सबको मालूम है, इंटीग्रेशन ऑफ 2 पाई वाई डी एस। ध्यान रखना, डी एस जो है दैट इज द स्मॉल पार्ट ऑफ द आर्क लेंथ। ओके, सो लुक एट द फॉलोइंग क्वेश्चन। फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द सॉलिड जनरेटेड बाय द रिवोल्यूशन ऑफ the asteroid x equals a cos cube t, y equals a sin cube t about the x-axis. It is given that it is rotated about x-axis, and the name of the curve is also given, that is asteroid. So people know the diagram of the asteroid. Just consider the dotted line. This arc, this one, this is the upper arc. Remember, Cartesian equation of asteroid x to the power 2 by 3, y to the power 2 by 3 equals a to the power 2 by 3. If we eliminate t, then you can find this squaring, then you can find this one taking. So cubing this equation, we find the 1/3 power of this one, so x to the power 1 by 3, then it will be cos t, then squaring and adding. So we find x to the power 2 by 3 plus y to the power 2 by 3 equals a to the power 2 by 3. You remember, if I consider x square plus y square equals to a square, then this is a circle. It is this, and its upper arc is this one. Here it is. But when the power is 2 by 3, then there is a symmetry. X 2 by 3 plus y to the power 2 by 3 equals to a to the power 2 by 3. Then this diagram is reduced into this format. Definitely when y equals to 0, x is a here, so this is a comma 0 here. Y equals to 0, then x is a. Similarly, find here it is x is 0, then y equals to a. So this line is x equals to 0 to x equals to a. It will be this. Since the asteroid is expressed in terms of parametric equations and this is in terms of Cartesian, this is your choice to solve the question using Cartesian equation or parametric equations. The concept of Cartesian we have already done. Today we will discuss the parametric part of this one, and this is easier also. Now remember, here x equals a, x equals a. So if it is x equals to a, then this a is cancelled out, then cos cube t equals to 1, and cos
is 1 when the angle is 0. So here t equals to 0. You remember, t is 0 here. At this part x equals to 0. When you put x equals to 0, then the value of cos is 0 when it is pi by 2. So this is that t equals to pi by 2. So I consider this arc, this one. So when it is rotated about the x-axis, then the surface is obtained. हमें एक पृष्ठ मिलेगा, उसका जो है वो एरिया कैलकुलेट करना है. This is rotated about x-axis, so this complete yellow part, this yellow part is rotated. Then the diagram is formed. So we will integrate from 0 to a, and we double this one because the same part is here. So it is required surface area. If people know the formula, it is 2 pi y ds. Remember this? This is the small strip. This is the y coordinate. Here this is ds. So this is the strip. You remember, the strip is just like this. I have already explained this one. So there are several strips. So it is just like this one, and this is the height of this one. It is already explained, remember, and this one is ds. So if I remove this one, then it is a rectangular strip, and the area of this one is length into the breadth. So here it is the circumference. You can see this. This is the circumference, and the radius is y, and circumference of the circle is 2 pi y. So here it is 2 pi y. This is the circumference. Means this is the complete length. It is this one, complete length. This is 2 pi y multiplied by this part. Here this is the straight one, but this is not the straight. Arc length. So arc length, that means ds. And we have several strips just like this one. So we just integrate, means we just add. Adding all the strips means we have to integrate. So it is 2 pi y ds. Now this ds can be converted into with respect to x-axis or y-axis, or with respect to parametric or polar coordinates, as you know that. Now it is with respect to x-axis. So I just write 2 pi y. With respect to axis, so I can write ds by dx into dx. Or, since it is parametric equation, so I write 2 pi y ds by dt. So we will use this one, and the limit is from t1 to t2. So required surface area will be the double of this one. So if we integrate from this to this, then we have to rotate this one. So it is twice of this. So required surface area is, why it is twice? Because it is from this to this one. And limit I consider, here it is 0 to pi by 2. Here t equals to 0. Remember, t equals to 0 to pi by 2. So it is t equals to 0 to pi by 2. T equals to 0 to t equals to pi by 2 with respect to t. Now the surface, you just imagine, आप कल्पना कीजिए कि सरफेस कैसा बनेगा. जो पिछले वाला वीडियोस था उसमें मैंने बताया था कि यदि इलिप्स की आर्क जो है वो मेजर एक्सिस के रेस्पेक्ट में यदि इसको रोटेट किया जाए तो तरबूज बनता है, वाटरमेलन बनता है. मैंने उसका 3D व्यू आपको बताया था. आपको इमेजिन करना है कि इसको यदि रोटेट किया जाए तो कैसा व्यू बनता है. पहले आप कल्पना कर लो, फिर मैं इसको 3D में आपको करके बताता हूँ. सो नाउ लेट अस व्यू द होल in 3D, and you enjoy the concept of mathematics. Okay? This is the 3D view. The red line is x-axis,
green one is y-axis and the vertical line, that is blue one, is the z-axis. This is the shape of asteroid. It is not a square. स्क्वायर इज बाउंडेड बाय 4 लाइन सेगमेंट. जो वर्ग होता है वो 4 रेखाखंडों से बंधित होता है और ये जो चाप है, आर्क है, ये चारों, और इस तरह के शेप को हम एस्ट्रॉइड बोलते हैं. आपको मालूम है इसका कार्टेशियन इक्वेशन जो है वो x⁻² प्लस y⁻²/3 इक्वल्स a⁻²/3 होता है. और पैरामीट्रिक इक्वेशन x इक्वल्स a cos क्यूब्ड t, y इक्वल्स a sin क्यूब्ड t होता है. अब इस एस्ट्रॉइड का जो अपर पार्ट है, आप कर्सर को देखिए ध्यान से, जहां मैं इसको मूव करा रहा हूं. इस अपर पार्ट को यदि एक्स एक्सिस के रेस्पेक्ट में रोटेट किया जाए तो किस तरह का सरफेस बनता है. लेकिन मैं इसका एक एक पार्ट दिखाऊंगा, उसके बाद हम दोनों पार्ट को रोटेट करवाएंगे. मैं यहाँ से इसको एलिमिनेट कर देता हूँ एंड लुक एट द 25% ऑफ दिस. मीन्स केवल फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो ये आर्क है इसको रोटेट करवा के देखते हैं एक्स एक्सिस के रेस्पेक्ट में. इसका जो शेप बनता है वो किस तरह से बनता है आप इमेजिन कीजिए और इसको देखिए कि ये किस तरह का इसका शेप बनेगा. इसको देखिए, बहुत ही ब्यूटीफुल. इस तरह से देखिए आप आर्क जो है एक्स एक्सिस के रेस्पेक्ट में किस तरह से इसके चारों तरफ जब ये रोटेट होती है तो देखिए बहुत ही सुंदर इसकी डिजाइन. ये बिल्कुल वैसे ही शेप बनेगा जैसे आपने शादी बारात में जो बैंड वाला होते हैं और जो बड़ा सा भोंपू होता है, तो ये बिल्कुल वैसे ही भोंपू बनेगा. ये देखिए, सामने की साइड में लुक एट दिस. दिस इज वेरी ब्यूटीफुल. ये बिल्कुल भोंपू है. और ये जो आर्क थी, इस आर्क को हमने रोटेट करवाया है. और ये देखिए सर्कल, देखिए इस सर्कल का जो रेडियस है वो चेंज हो रहा है. और ये स्ट्रिप बनी है, जो रिबन बनी है, इस रिबन का ये कर्व्ड पार्ट है, आप देख सकते हो ये वाला पार्ट. और ये बड़ा वाला सर्कल, ये छोटा वाला सर्कल. आपको मालूम है कि किस तरह से इसका मैथमेटिकल पार्ट होता है और हम किस तरह से इसका एरिया कैलकुलेट करते हैं. तो ये जो आर्क थी वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में ली थी मैंने. और इसी आर्क को यदि हम सेकंड क्वाड्रेंट में बाय द वे रोटेट करवाते हैं तो बिल्कुल वैसे बनता है इसका शेप, लेकिन वो उस साइड से बनेगा. देखते हैं इसको. इसको मैं यहाँ से हटा देता हूँ और ये इसका ये वाला पार्ट देखिए, ये वाला, ये सेकंड क्वाड्रेंट में है ये. अब इस सेकंड क्वाड्रेंट में जो इसका शेप बना है उसको यदि रोटेट करवाते हैं तो बिल्कुल वैसे ही बनेगा जैसा हमने थोड़ी देर पहले देखा है इसको. ये देखिए सामने से. तो यदि अपर आर्ट को यदि हम रोटेट करवाते हैं और इसका जब एरिया कैलकुलेट करेंगे तो फर्स्ट क्वाड्रेंट की जो आर्क है उससे जो सरफेस एरिया बना है उसको डबल कर देंगे तो ये कंप्लीट इसका एरिया हो जाएगा हमारे पास में. बिल्कुल वैसे बना है, सिमेट्रिकल है फिगर.
दूसरे कलर का। बहुत ही शानदार व्यू इसका। अब कंप्लीट आर्क को लेते हैं, यानी इन दोनों भोंपों को हम मिलाते हैं, दोनों कर्व को एक साथ, देखते हैं कि इसका क्या पार्ट बनता है। लेट अस सी। दोनों को मिलाने से, एक्चुअल में जो हमें एरिया कैलकुलेट करना है वो दोनों को मिलाने से है। देखिए मैंने दोनों आर्क को यहाँ से कंबाइन कर लिया है। ये वाले जो आर्क है ये फर्स्ट क्वाड्रेंट और सेकंड क्वाड्रेंट में दोनों में है ये इस तरह से। अब इसको रोटेट करवाएंगे एक्स एक्सिस के रेस्पेक्ट में, लेकिन जब भी मुझे एरिया कैलकुलेट करना होगा तो मैं इस वाले पार्ट का मैथमेटिकल पार्ट लिख के उसको डबल कर दूंगा तो मेरे पास में कंप्लीट पार्ट आ जाएगा। लेकिन इसको यदि रोटेट करवाते हैं तो देखते हैं कि किस तरह का जो शेप है वो बनता है। आप उसको ऑब्जर्व करेंगे। ये देखिए, ये देखिए दोनों आर्क एक साथ, यानी एक्स एक्सिस के ऊपर जो एस्ट्रॉयड का पार्ट है, एक्चुअल में हमें इसको कैलकुलेट करना है, लेकिन मैंने आपको अलग अलग टुकड़ों में करके बताया है। ये देखिए दोनों भोंपू एक साथ मिल गए। जब एस्ट्रॉयड के आर्क को, अपर आर्क को एक्स एक्सिस के ऊपर जो कंप्लीट आर्क है उसको यदि एक्स एक्सिस के रेस्पेक्ट में रोटेट करवाया जाए तो जो शेप बनता है वो इस तरह से बनता है। दोनों भोंपू जो है आपस में मिल गए हैं। हमें इसका एरिया कैलकुलेट करना है। So this is the complete view you can see। एस्ट्रॉयड को हम जब रोटेट करवाते हैं एक्स एक्सिस के रेस्पेक्ट में तो ये सरफेस बनता है। ये जो बैंगनी कलर का जो भी बना है उसका हमें सरफेस एरिया कैलकुलेट करना है। सो नाउ कंसिडर मैथमेटिकल पार्ट ऑफ दिस वन। थैंक यू। So I hope you have enjoyed. This is the way to express the 3D view of the surface of revolution. Now we consider its a mathematical part. Okay, so come to the point. Remember, I just remove all the things. Here it is the limit 0 to pi by 2, 2 pi by ds by dt. So I just write it here. Required surface area 2 times 0 to pi by 2, 2 pi y ds by dt. This is number 1. Now this is 2 0 to pi by 2, 2 pi by, this is under root of dx by dt whole square plus dy by dt whole square. Okay, x equals to a cos dt, therefore dx by dt is 3 minus 3a cos square t into sin t, and y equals to a sin cube t, dy by dt is 3a sin square t into cos t. Therefore, ds by dt is under root of
dx by dt whole square plus dy by dt whole square equals to under root of, this is 9a square cos to the power 4t sin square t plus 9a square sin to the power 4 cos square t. So it is 3a sin t cos t. So cos square t, sin square t is common. So here cos square t is left and sin square t is left. So the answer is 1. So this becomes 3a sin t cos t. This is the value of ds by dt. So just substitute here. It is 2 times 0 to power by 2, 2 pi. Y is a sin cubed t, and this is 3a sin t cos t. Now this is the integration. So it is 2 to the 4, 4 to the 12. This is 12 a square 0 to power by 2 sin to the power 4 cos t. A, yes. Okay. Now this integration can be simplified by using gamma function, or you can use method of substitution. So here I say let sin t equals to p. Therefore cos t dt equals to dt, and limits t equals to 0, p is 0, t is power by 2, then p is 1. Therefore required surface area is 12 a square 0 to 1 t to the power 4 d. Okay, sin t is assumed as p. Now this is 12 a square, integration is p to the power 5 upon 5, limit 0 to 1. So this becomes 12 a square 1 upon 5. So it is 12 a square by 5. This is a standard question. So if we use the parametric equations, and people know that the ds is replaced by ds by dt and ds by dt, people know from calculus, I have already taught, मैं आपको पढ़ा चुका हूँ कि इसको किस तरह से सिंप्लीफाई करते हैं, किस तरह से इसको कैलकुलेट करते हैं. And after getting the answer, we found it is 12. I hope pi is, I forgot to write pi here. Yes, this is, yes. In terms of pi, definitely forgot this. Here it is pi, here it is pi. So this is 12 pi a square upon 5. Now you just remember the area of circle x square plus y square equals to a square is pi r square, means it is pi a square. So what is the surface area of that particular one, that when asteroid is rotated about x-axis, then its area becomes 12 upon 5 pi a square. And if I consider that is 3 upon 5 and this is 4 pi a square. Listen, 3 pi a square is the surface area of sphere. Sorry, 4 pi a square is the surface area of sphere, and this is 3 upon 5 times 4 pi a square. So that is a particular relation. Sometimes it is asked in competitive examination. So when the upper arc of the circle is rotated, the sphere is obtained, and the upper arc of the asteroid is rotated, then whatever the surface is obtained, its surface area will be 3 upon 5 times of
surface area of that particular sphere. So it is just like this one. So now I hope you have enjoyed this particular concept. Thank you very much. Jai Hind.